Hi students, today we will learn instance variables versus class or static variables. Okay, so instance variable topic is instance variables and class or static variables. So instance variables versus static variables. So पहले difference समझते हैं. Okay, so instance variables or static variables. So number one, instance variables are declared in a class but outside a method, constructor or any block. Okay, and static means class variables. So class variables, also known as static variables, are declared with the static keyword. यहाँ पर static keyword होगा. Okay, in a class but outside a method, constructor or a block. Number 2 point, instance variable are created when an object is created with the use of keyword new. Okay, so and destroyed when the object is destroyed. Number 2 point, static variables are created when the program starts and destroyed when the program stops. Okay, so some basic differences. Number 3, instance variables can be accessed directly by calling the variable name inside the class. Okay, number 3, यहाँ पर static variables can be accessed by calling with the class. Here instance variables, however, within static methods, when instance variables are given accessibility, they should be called using fully qualified name object reference dot variable name. Number 4 points, instance variables hold values that must be referenced by more than one method. Okay, constructor or block, essential parts of an object, the state and must be present throughout the class. Static variables, there would only be one copy of each class variable per class, regardless of how many objects are created from. So basic मैं ना क्या करता हूँ, एक प्रोग्राम करके देखते हैं. ओके, सो लेट्स start Bluej. Okay, so new class, instance and class variables, instance or class or static. Instance, double click, so class, control A, delete. So class, instance static, उसके बाद int, मैंने एक वेरिएबल लिया int iv means instance variable. Okay, iv equals to 10. Okay, so iv for instance variables. Next एक static variable लेते हैं, static int is b equals to 30. so ये static variable. Okay, उसके बाद देखो public static void main. उसके बाद क्लास का नेम ICSE object equals to new obj new is. so मेरा ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन हो गया. उसके बाद प्रिंट करना है सिस्टम आईवी को और एसवी को. ओके,
system dot out dot print ln value of instance variable so obj dot iv ओके उसके बाद obj dot iv कंट्रोल C obj dot iv सो इंस्टेंस वेरिएबल के लिए ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना होगा ओके ऑब्जेक्ट उसके बाद यहाँ पर वैल्यू ऑफ स्टैटिक और क्या क्लास वेरिएबल स्टैटिक और क्लास वेरिएबल यहाँ पर क्या होगा ये तो एस भी होगा और ओबीजे यहाँ पर नहीं होगा ओके स्टैटिक वेरिएबल के लिए ऑब्जेक्ट डिक्लेयर नॉट नेसेसरी सो IS क्लास का नेम होगा बस उसके बाद सेकंड ब्रैकेट क्लोज मेन का और क्लास का ओके उसके बाद कंट्रोल के कंपाइल सो नो सिंटैक्स एरर क्लोज राइट क्लिक वाइट मेन देखो वैल्यू ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल्स 10 वैल्यू ऑफ स्टैटिक और क्लास वेरिएबल 30 ओके लेट्स चेक्स अगेन सो ये मैं हाइड कर देता हूँ कमेंट लाइन ओके उसके बाद देखो कंपाइल नो सिंटैक्स एरर वैल्यू ऑफ स्टैटिक वेरिएबल्स क्लास नेम है is.sv सो स्टैटिक वेरिएबल्स क्लास नेम डॉट वेरिएबल नेम होगा ओके सो कंपाइल सॉरी वाइट देखो वैल्यू ऑफ स्टैटिक वेरिएबल्स 30 बट अगर इसको मैं स्टैटिक को हाइड कर दिया ओके और ये जो ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन इसको हाइड कर दिया अब देखो इसको ये तो प्रिंट नहीं होगा है ना नहीं होगा कैन नॉट फाइंड वेरिएबल ओबीजे चलो ओबीजे के हटा देते हैं सो आईवी नहीं नॉन स्टैटिक वेरिएबल ओके नॉन स्टैटिक वेरिएबल आईवी कैन नॉट बी डिपेंड्स फ्रॉम स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट सो यहाँ पर स्टैटिक भी कर देते हैं सो ये क्लास कंपाइल सो इसको हम हाइड कर देते हैं सो इंस्टेंस वेरिएबल स्टैटिक बट स्टैटिक तो ये इंस्टेंस वेरिएबल नहीं होगा सो वी कैन नॉट राइट static because statics for static class variable okay so यहाँ पर क्या होगा obj dot iv yes okay I hope it is clear to you